Hello. A very good evening to everybody Good present evening, here. ma'am. Very good evening, my dear. I welcome you all for reading this book with me. Another 1 minute. We will wait for everybody to join. 1 more minute to go. Okay. So, what was yesterday's practice? To think of whatever and that all of it is successful. Sorry. Think of what all we are going to do today. Magical to-do list, yes. And imagine that all of it we have done successfully or all of it has been done very well. Wonderful. Wonderful. Who has done this today? I have done it. Very good. So what all went well, since you must have done it in the morning only? So what all do you think so went as per your gratitude only? मुझे अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग लेने और शॉपिंग करने जाना था आज। उसको कुछ समझ नहीं आके देता है। आज उसके और मेरी चॉइस मैच हुई, हम फटाफट से लेकर आ गए। Wonderful. Wow. Wow. और क्या हुआ? Anybody else? If you have done this, I would like you all to share it if you have done this. People are still joining. मधु जी ने करा? जी मैम, मैंने मॉर्निंग में किया था, तो जब मैं मेरा मॉर्निंग का रिचुअल कर रही थी तो आई डिड and it's silly, but like I had to cook today because I had to leave later and I had some guests. So I was like, Amara vegetable wala comes a little late and I wanted to go by like 12:30. So if he comes by 11, 12, then I know I can't do it. So I needed certain items. And while I was just preparing for it, I was thinking about it. I just saw another sabji wala go. So I was able to take everything and finish my work. So I was like, wow, good. So it's not that, like, for like, it's like that happiness. Like we wait for that happiness, one big thing to happen, and then we will be happy. So you have to be very, observant keh lo, kuch bhi keh lo, just enjoy small things. So same way the gratitude, we don't have to feel किसी बड़ी चीज में gratitude होगा. छोटी बहुत सारी चीजें बड़ी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा. You'll not know also. I think और एक और चीज मैंने अभी 12-15 दिन में सीखी है कि when अगर हमारे माइंड में इतना ट्यून हो जाता है छोटी छोटी चीजों को भी, now I've become like after all this I've become very conscious कि whenever I usually say thank you, but now as you say gratefully I'm thank you, I say okay thank you so much, kind of थोड़ा सा stress करके. So I'm doing that. So I think when we start doing that, somehow I don't know, either the negative has stopped happening. I don't think that would have been, but I think our mindset has just changed. So like we start feeling, oh, everything is working out so well for us. Yes. I feel that's my take for the I think those wonderful, those who all are doing, they would vouch for it, my dear Madhuji. This is how things move. Like, you know what, when you don't have any, you are not complaining, you are very happy, things are going because you're observing all the small things which we used to never observe before. So now when we observe, how do we feel? वही ना, हमको परेशान क्या करती है, कंप्लेन से तो परेशान करती है. तो यदि आज का बात करें हम, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और हम सब बता सकते हैं, क्योंकि हम सबके पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं.
आप घर में देख लीजिए, बाहर देख लीजिए, दोस्तों में देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए, वी ऑल हैव रिलेशनशिप्स, राइट? तो कोई रिलेशनशिप अच्छा होगा उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा? अपने आप से नहीं चीजें हो जाएंगी। कैन एनीबडी थिंक ऑफ समथिंग like, okay, in order to have a good relationship, what would one do? Not complain. One thing, not complain. So if the complaint comes, then what would you do, Madhuji? It's not that after you finish this you will not complain. Suppose if something is sometimes some small, there is a very silver thin line between love and lust. So there is a thin line between complaint and gratitude. So what would we do? So we'll just say, yeah, but I'm still grateful for the other things that Yes, I have. that means I have already observed what is that grateful. Think about that person, and then naturally, if you think this way, that old feeling of complaint would evaporate. For sure. Wonderful. Wonderful. What else would we require? This question is to everybody, huh? What, because we have relationships all over. You talk of the family, you talk of friends, you talk of colleagues, you talk of bosses, everywhere. So what would it require to have a good relationship? As Madhuji says, one thing is avoid complaining. Very good. What else would we require? See, relationship can be something which is a close knit also. एक family में भी 10 तरह के relationships है. So what would be required? I feel we should have a human touch when we are speaking to somebody. We should not especially to the peoples who are deprived, like our maids or some people who are means like our somebody who's serving the food. Okay. We should feel first the other person as a human being and not like a servant. We should have a human touch first. We should be grateful, as you have been always telling us. That's and we should always attach a feeling. Feeling means it is not somewhat a mechanical or a superficial. It should be something which should come from your heart. Wonderful. Automatic, that you feel for him. At least try to spend some time with him, hear him, understand him. And we are not always in a position to help them, but hearing their problems or listening to them will always feel the warmthness of our relationship. Wonderful, sir. Beautifully said. Yes. Yes, Manisha ji. What else would we require to have a good relationship? Acceptance. Only acceptance for me. Acceptance. Acceptance, accepting जो the... जैसा है ठीक है. हाँ. अच्छा है. मेरे लिए अच्छा नहीं भी है, वो किसी और के लिए अच्छा है, तो वो गलत हो जाएगा. मेरे लिए अच्छा नहीं, बात तो मेरी नहीं तो है. बात तो मेरे साथ अच्छा नहीं भी है, बट वो पर्सन बुरा नहीं है, वो पर्सन यदि मेरे मन में ये आया है कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा नहीं है, फिर तो वहां कंप्लेन है भाई. वो अपन सब, ये ऐसा नहीं मनीषा जी ये आपकी तरफ से आ रहा है, ये हम सबके पास है. आप ये सबके लिए बात कर रहे हो. तो वो यदि कंप्लेन आ रही है, मेरे मन में है तो कंप्लेन, तो आप देखिए आपका मन जो कहेगा बात तो वही बनेगी ना. जैसे मैं कल परसों आपसे बात कर रही थी, ये आपने बहुत अच्छी चीज कही है, क्योंकि ये तो आपने शब्दों में डाल दी, वरना हम बहुत सारे लोग शब्दों में डाल ही नहीं रहे इसको. अभी जैसे मैं आपको थोड़े दिन पहले ही कह रही थी कि ग्रैटिट्यूड काम नहीं करेगा बाहर से. तो मैं आपको बोल रही हूँ मनीषा जी, यू आर सो गुड, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू अंदर से मनीषा. तो ये चीज काम नहीं करेंगी. बिकॉज हम लोगों को याद रखना है कि वाइब्रेशंस, सब लोग एनर्जी है. हाँ. मेरे साथ कहता है कि मुझे ना पहले गुस्सा आता था कि वो मेरे साथ अच्छे नहीं है. अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता है कोई बात नहीं, वैसे पर्सन अच्छे हैं, औरों के साथ अच्छे हैं, बाय द टाइम ये ठीक हो जाएंगे मेरे साथ.
गुस्सा आना कम हो गया है, नहीं, एक्सेप्टेंस आपको लेवल ये इतना हो देखना होगा, वेरी गुड, यदि आप ये भी चेंज अपने आप में पाते तो देखिए, गुस्सा करने से तो वो क्या कहते हैं कि आप 4 लोगों को जब गाली देंगे तो वो गाली दूसरों को नहीं लगेगी, गाली हमें ही लगेगी। वो जो जलन होगी उसकी वो गया। हमें ही होने वाली है, किसी और को नहीं होने वाली गुस्सा भी आ रहा है ना। तो जब, तो मुझे उस वक्त क्या देखना है कि आखिर इंसान में कुछ तो अच्छा है ना। हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला ऐसा ऐसा करता है, अव्वल तो हम यदि एक्सेप्ट करेंगे किसी को भी एज इट इज, तो अपने को देखिए, आज यदि कोई मेरे साथ फ्रेंडशिप रखता है, मेरे से कोई रिलेशनशिप रखता है, तो दे हैव टू एक्सेप्ट मेरे प्लसेस एंड माइनसेस। किसी भी इंसान में सिर्फ प्लस नहीं हो सकता, किसी भी इंसान में सिर्फ माइनस नहीं हो सकता। और यदि मुझे किसी में भी दूसरी चीज दिख रही है तो मुझे अपनी चीज नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे सिर्फ दूसरे की चीज दिख रही है। मैं बार बार कह रही हूँ मनीषा, ये आपकी तरफ से नहीं है, ये हम सब की तरफ से ही है। हम सब लोग ऐसा फील करते हैं। ट्रेसेस में हो सकता है, लाइट हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यदि ऐसा नहीं होता तो हम जजमेंट्स क्यों पास करते हैं? वी आर सो स्मार्ट एट पासिंग अ जजमेंट। अगले ने बहुत अच्छी शादी अरेंज करी है, बहुत लाखों रुपए खर्च कर लिए, हमें तो, हमारा तो एक सेंटेंस कुछ अच्छा नहीं था यार, उस बेचारे ने पूरा महीना लगा दिया उस शादी को अरेंज करने में, राइट? बट देन हमारी एक ही लाइन काफी है, अच्छा नहीं था, राइट? ये क्या है? ये जजमेंट है। मैम मेरा और एक ऑब्जर्वेशन है, द हाँ सर। कंप्लेनिंग increases when we are meeting मतलब powerful peoples who are powerful than more than us. हाँ, हम उनके ऊपर ज्यादा कंप्लेंट्स करते हैं यस, rather than the people who are मतलब जिनके ऊपर हमारी पकड़ अच्छी है या तो हम जिसको दबा सकते हैं। बहुत अच्छा Because पॉइंट है सर, पर आपको क्या लगता है अपन वो उन बड़े लोगों की कंप्लेन करते क्यों है? say it is things are not in our control. Suppose हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई हाँ, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी हाँ, में या तो आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, हाँ, आप इफ यू आर नॉट इन अ फॉल्ट देन आल्सो पुलिस आपको पकड़ के चालान कर देती है, या तो समथिंग समथिंग कुछ और। यू कैन नॉट आर्ग्यू, या तो आर्ग्यू भी करेंगे तो यू विल नॉट गो इनटू सम बिग लीगल केस में, तो आप जाना नहीं चाहेंगे। आप जैसा तो हाँ, क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, आप ग्रज कर सकते हो कि मतलब आपके पास पावर है, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, हमारे ऊपर ऐसे, मतलब वी जस्ट कंप्लेन इन दैट वे, क्योंकि ओके, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है उसके। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताइए देव जी कि हाँ, हम अपने से पावरफुल हो, अपने से रिच हो, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल हो, हमें यदि किसी ने उनके बारे में एक लाइन कही कि वो ऐसे हैं, हम उसको मान के और आगे भी बढ़ा देते हैं कि पता है हमने नहीं देखा है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहेगा देव जी इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ना मुझे किसी ने कहा कि देव जी ऐसे करते हैं, मैंने आई हैव नॉट फाउंड आउट कि क्या चीज है, बट देन मैं उसको आगे ऐसे कैसे परोस रही हूँ। वाई वाई डू वी डू दैट? बिकॉज जो चीज मेरे पास नहीं है and somebody else has it, most of the time or many a times it is seen, like if somebody is very rich, we would, अब जैसे today only I met somebody, that family is doing some sort of, हमारे आजू बाजू में, हमारे बाजू में नाथद्वारा जी है, नाथद्वारा जी में वहां पर श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ी वो है, जो जाते हो उनसे अच्छे से जानते होंगे। तो वो वहां पर एवरी ईयर दे गो फॉर या राजयोग, और उस राजयोग में 60 से 70 लोग ले जाना, और उस 70 लोगों को ले जाना, उन सबकी सारी सुविधाएं देखना, सारा दिन उनको खाना पीना, एवरीथिंग इज टू बी टेकन केयर ऑफ। नाउ इफ somebody is doing it, and if somebody is taking the person, I mean so many people, you know, it takes time and effort to arrange for things. अब सपोज मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मैं भी गई और वापस आने, अच्छा उनकी वजह से मैंने दर्शन किए, ये तो मुझे, मेरे अंदर बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि उनकी वजह से मेरे भी दर्शन हो गए, वरना शायद मैं नहीं जा रही होती। बट अब जो उनके अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से करे होंगे उन्होंने, बट ठीक है, कहीं पर ह्यूमन एरर हो भी जाएगा या समथिंग, आई माइट नॉट लाइक
What will I do? नहीं है अभी, सैटरडे संडे नहीं है। समिता जी प्लीज म्यूट कर दीजिएगा माय डियर। जी ऐसे केस में गुस्सा आ जाता है कि हाँ अरेंजमेंट ठीक नहीं है, या हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, या रादर थॉट निकल जाते हैं कि क्या कैसा अरेंजमेंट किया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा। तो व्हाट आई सजेस्ट, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, एटलीस्ट हमको ये ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमको उनके वजह से यहाँ तक आने मिला, हमने दर्शन हुए और हमारे जो बेनिफिट हुए, तो दैट इज मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू द डिसएडवांटेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, जो हमको नजरअंदाज कर देना चाहिए कि आई एम वेरी लकी कि मुझे ये एटलीस्ट ये मिला। आई शुड नॉट बी ऑन सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज पे भी आई एम हैप्पी लाइक, एंड गोल्ड पे भी आई एम हैप्पी, और इवन नहीं भी मिला तो आई एम पार्ट ऑफ दैट ओलंपिक प्रोसेस, मेरा नाम भी आए, मुझे दर्शन मिले। दैट्स इट माय ओपिनियन। वंडरफुल। ये सारी चीज हम जो बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस अपनी जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत आती है। तो हमें करना क्या है? हम लोग इन सारी चीजों को बात क्यों कर रहे हैं? इसका करने का एक ही औचित्य है, एक ही पर्पस है कि वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स कि इनमें से क्या क्या चीज हम लोग अनइंटेंशनली कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन नहीं है बट वी आर डूइंग इट अनइंटेंशनली। ऐसा कुछ है क्या? यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाती है और खराब बनाती है। और बात करेंगे आगे। एक बार स्टार्ट करते हैं हम बुक रीडिंग को। मैम एनीबडी? यस माय डियर निधि जी। मैम एक मेरी अगर सामने वाला बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है, लेकिन आप में कमियां हैं, हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट, लेकिन वही बात बार बार हो तब भी गुस्सा ना आए। मतलब कि सामने वाला आपको बार बार कुछ कहे? यस मैम, मतलब आपकी जो आपके अंदर नहीं है जो चीज, हाँ हाँ हाँ। तो नहीं। तब भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब आप एक सेकंड के लिए टेबल टर्न्स करिए। आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसा करते हैं क्या? और आप यदि किसी को बार बार बोलते हैं, सोचिए अभी अपन आएंगे आपके सोल्यूशन पे। अभी सोल्यूशन आपका आया नहीं है। What do you all think, my dear? निधि जी जो कह रही हैं कि कोई आपको बार बार कहेगा तो गुस्सा आएगा, डेफिनेटली गुस्सा आएगा, बट क्या अगर करना चाहिए? हम में ही अगर कमियां हैं तो वी शुड एक्सेप्ट कि हमारे में कमी है, तो वी आर इम्प्रूविंग रादर। मेरे साथ भी हुआ है, गुस्सा आता था, लेकिन फिर शांति से बैठ के सोचो तो ऐसा लगता है कि मेरी कमी बता रहा है, तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। आज मेरे पास 10 पॉइंट है, वो मुझे बता रहा है, तो मेरे 20 पॉइंट हो गए। तो आई शुड बी, माई टारगेट शुड बी कि मैं 90-95 पॉइंट्स तक जाऊं, तो मेरी कमियां सारी वाइप आउट हो जाएगी, एंड आई विल बी ऑन अ वेरी हायर ग्रेड। तो वी शुड एक्सेप्ट इट। और एंगर मैनेजमेंट अगर आप जानते हो तो थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ और बाद में जो भी बोलना है बोलो, टू अवॉइड स्पॉइलिंग ऑफ रिलेशन। Very true. Nidhi ji, what I would like to add is कि when if somebody is saying something to us, ऐसे तो if you remember, आप नहीं थे शायद उस वाले सेशन में, हम लोगों के पास हमारी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो हमें सच बताते हैं। अदरवाइज कोई भी रिलेशनशिप खराब ही नहीं करना चाहता कि मैं क्यों बोलूं, सामने वाले जैसा करता है उसको करने दो, अपने को क्या करना है। तो ऐसे वाले लोग ज्यादा हैं, और बशर्ते हमें ये बताएं कि यदि ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स हम सब लोग चाहते क्या है? हम सब लोग चाहते कि कोई प्यार से बताए, राइट? तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो वो चीजें बोल रहे हैं उसमें से कितनी चीजें हैं। और दूसरा, यदि अभी जैसे मनीषा ने कहा, और जैसे हम कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड की 4 एज में एक ए है एक्सेप्टेंस। कि यदि कोई मेरा क्लोज रिलेटिव है और जिसके साथ मुझे रहना ही है, तो फिर उसकी चीज कर चिढ़ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ और चिढ़ने वाली चीजें अट्रैक्ट करने से फायदा नहीं है, अपना दिन खराब करने वाली बात है। तो इट्स बेटर आई एक्सेप्ट, एंड देन आई ऑल्सो सी कि आई एक्सेप्ट कि मैं खराब हूं नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एक्सेप्ट कि ओके ठीक है, सामने वाले को ऐसा लगता है, इट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके और आपको लगता है कि यस देयर आर आउट ऑफ 5 थिंग्स, दीज आर 2 थिंग्स आई रियली अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे ये थोड़ा चेंज करना चाहिए। वेरी वेल, मैम ट्राई करती हूँ टू चेंज, बट फिर भी वही होगा। मिस्टेक्स। आप ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, कभी आप मुझे और कनेक्ट करिएगा, या जब हम शेयरिंग करेंगे ना, आप और क्वेश्चंस लेके आइएगा,
I think we all will be able to help you, my dear. If the person is very close to you and is understanding, you can ask him, how do I improve? Can you please help me to improve? Sir, okay, I will. Actually, no doubt, he is very good. But मेरे अंदर मैं उस चीज को मानती हूँ, लेकिन सर मैं नहीं इम्प्रूव कर पा रही हूँ ट्राई करने पे भी. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं. आप कोशिश कर रहे हैं? यस सर, यस मैम. एक अभी मैं और बात करूंगी इस बारे में, अपन और बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट रीडिंग. किशोर जी, प्लीज हेल्प अस विद शेयरिंग. ओके. हु विल रीड फॉर मी टुडे? कौन पढ़ना चाहेगा? Anybody who would like to read? Yeah, I can read, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Dharmesh ji. Thank you so much. Ma'am, page number? Page day 15 है sir. मेरा book में तो page number is 141. 259. 259. Chapter 15. Yeah, chapter 15, 259. Umesh ji says. अब आप देखिएगा ये रिलेशनशिप कितनी बार आ गया, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है जहां हम फंसते हैं. एंड वी रून आवर लाइफ फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. Like if you sit with somebody who's recently got a breakup, any couple or any relationship which has gone sour, आप देखिए, आप जब बैठोगे as a third person, you will think यार कितनी छोटी छोटी बातें हैं, and the relationship is gone forever. Okay, that's it. We start from here. Okay. Okay, let me start here. So, if you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through a gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. Yes, sir. Now, you see, when we're talking about relationship, can we survive? Suppose if we live in a family, it has to go on. If we are working and it is an office relationship, it has to go on. You have to see each other every day. If it is your client also, then also you have to go on. If it's your neighbor also, it has to go on. So, my dear friends, if we are not blaming some of us for anything and everything which is not working for me, I would look for scapegoats. Because of this person, because of this situation, because of my neighbor, because of my wife, because of my daughter, because of my son. Except me, I can blame anybody and everybody. So what am I talking about? I'm talking about these small, practical yet very important things which ruin our relationships. So I have to check myself whether I blame others for anything or everything. See, when I cannot handle something, when the situation is beyond my control, it's easy for me to blame than to take the responsibility. So we have to check ourselves. Nobody else can check it for us. Because if somebody would tell us, we will not like it. We will not like it. We will not like to hear it also. So therefore, because if you remember, we were talking about this relationships. हम लोग बाहर वालों की तो बहुत कदर करते हैं, परवाह करते हैं, अपने वालों की नहीं करते हैं. Right? Yeah. Yes, sir. Okay. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Now, my dear, if I blame someone very close to me, now what do you think will happen?
The person may still be there in your life, but then the person would have would develop a deaf ear. The moment you start blaming, the person would stop hearing. It's not that the person has to put hand. Energetically, the ears, they stop hearing. So now, why am I now this blaming? So when I am blaming, somebody is not listening because I am blaming for anything and everything. It is not that if we are in a relationship, everybody is wrong and I am the one who is right. We have to come out of this belief, right? So this blame game is very bad. So we will be very cautious. And then again, whenever there is a blame, there is not a shred of gratitude. आप जब कंप्लेन करोगे इतनी सी भी ग्रेटिट्यूड नहीं है वहां पे. देखिए साहब, आप जब किसी चीज का रिस्पेक्ट करते हो तो आपकी आंखें, आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज बदल जाती है. और जब आप कंप्लेन करते हो तो उसके साथ भी सब चीज ही होती है. तो जब मैं कंप्लेन कर रही हूं तो मेरे पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, और जब मेरे पास ग्रेटिट्यूड नहीं है तो मैं मेरी जिंदगी में कभी एबंडेंस नहीं आ रही, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं आ रहा, कोई हैप्पीनेस नहीं आ रहा. सो इफ आई नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स, we will stop doing this. Yes, dear. Okay. Okay. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings from about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who will get burnt. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Bad feelings about... One sir. Go ahead, ma'am. Go ahead. Yeah. My dear ones, when we talk about others, जब बहुत सारे हम हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि बहुत गलत हम बोल रहे हैं. So if a current relationship or a past relationship, if यदि कोई relationship खराब हुई है तो उसमें कुछ चीजें खराब हुई होंगी, तभी तो वो relationship खराब हो गई है ना. अब वो खराब हो गई है, कोई भी relationship दोनों इंसानों की वजह से चलती है, किसी एक इंसान की वजह से नहीं चलती है. अब उस रिलेशनशिप के लिए यदि मेरे अंदर बहुत गलत बातें, मैं जिससे मिल रही हूँ मैं वही बातें बोले जा रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग एक्चुअली. यहाँ इस टंग से मैं जो गलत चीजें बोलने जा रही हूँ, एक्चुअली व्हाट एम आई डूइंग, आई एम कीपिंग दैट कोल, बर्निंग कोल, यानी वो जो गलत चीजें मैं यहाँ पर रख के बोल रही हूँ, जिसके लिए बोल रही हूँ शायद उसको सुनाई भी दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है, but I am burning myself with that. Means what? आप किसी के लिए भी कुछ बोलने के बाद we cannot have good feelings inside us. हमें भी उस कुचुर मुचुर को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप देखिए there is no peace of mind, there is lot of irritation. तो जब irritation आ रही उस दिन देखिए क्यों आ रही है, आपको बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी. यदि आज मैं बहुत irritated हूँ तो मैं को किस चीज से इरिटेशन आ रही, जरा सिट डाउन एंड डू इट. तो when I'm talking ill about others, what am I doing? Actually, I want to throw that hot coal on somebody, but वो उस किसी और के ऊपर तो नहीं जाता है जब वो मेरा गला ही जला देता है. So whenever we start talking about anybody, we should remember कि ये कोयला मुझे जला देगा. Yes, sir. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they won't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to our relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for your life, of their life, gratitude. Yes. See, my dear friends, when I tell you, when we practice gratitude at home, we are indirectly teaching our children. Why? Because we are the greatest role model for our children. Whatever we all do, you feel as if the children are not watching, they are watching every move of us. So they learn. So if we are into gratitude, they learn that also.
No, in many houses, what happens? Like in front of the children, only we talk about our family members. Your uncle is like that, your aunt is that, your grandma, grandpa, whatever. What are we putting in our children's mind? That is to be thought. So instead, if we put gratitude in their minds or in their way of life, we have given them the greatest gift. So right now also, at this particular stage, on day 15, like if we are not, the children are not sitting with us while reading, what can we do? We can still practice gratitude jar. We can all have a small box where you can just write gratitude jar. Tomorrow I'll show it to you. In that gratitude jar, you just make it a rule that every afternoon or after lunch, we all have to write one gratitude. घर में जितने भी मेंबर्स हैं, आप, मैं, बच्चे, सब लोग जो भी घर में अपन रहते हैं, सब लोगों को एक एक ग्रेटिट्यूड इसमें लिखना है. और महीने के आखिरी दिन सब बैठ के आप उसको खोल के पढ़िए. आप देखिए आपका घर का माहौल, यू विल बी सो हैप्पी एंड यू विल रियलाइज दिस इज व्हाट इज कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड कम्युनिकेशन, मोर ओवर गुड कम्युनिकेशन, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट की है फॉर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप. सो वरना क्या होता है, आफ्टर सर्टेन एज we don't have much to talk about with our children. खाना खा लिया, ये कैसा है, पढ़ाई कैसी है, blah blah. बच्चा अपनी फ्रेंड्स की दुनिया में बिजी है, वो अपनी दुनिया में बिजी है, हम हमारी दुनिया में बिजी है. There is no communication. So in order to have that rich communication, in order to have that rich relationship, try doing this. And this gratitude, believe me, dear friends, it will take us to greater heights. It's just a matter of practicing it. The more we practice it, so from tomorrow, just practice this gratitude jar with your kids. Ensure that they write one thing, doesn't matter how they write it. Let them start doing it. And then you see how things will change for all of us. Yes, sir. Okay. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. See, the author is talking. Yes, sir. Sir, after every paragraph, just give me some time. Okay, fine. Okay. Yeah. So, like the author is going to tell us about her parents who were separated. So she's going to tell us how the gratitude transformed them magically, the emotional pain. Like, as I told for some of my friends also last time, when my mother passed away a few months back. So there were few things for which I was really grateful. And then those things, they helped me a lot to, to come into terms with that thing. Although the loss is permanent, nothing can be changed now. That is there. But then because of gratitude, I was able to heal myself faster. And there were few things for which I was very happy, thinking that we all have to leave this place. But then how was her life? How did she go? All those things, the way, and she was with me for so much. I mean, before she passed away, she was with me. So all those things gave me a lot of happiness. And I was so grateful to my Almighty for doing that for me. So that helped me. So therefore, I'm trying to stress here is this gratitude will magically transform our emotional pain. Now, she's going to tell us how this emotional pain was nullified when her parents, they were separated. Yes, sir. Yeah. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, sorry, go ahead, ma'am. Yeah, okay. When my father died, when my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for.
She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. This is possible for everybody. I would like to take all of you to your first day of your wedding. How did you feel for your spouse or the person you were to spend rest of your time? How did we all feel? And then after so many years, do we feel the same feeling, or something else has seeped in also? So it is a thought for all of us to ponder over. How were things? So I'm sure we all are married. Everybody's married here. So how was the first day? And then after whatever years have passed, how do you feel about things? Are we taking things for granted? Or are we only now looking at the part which is giving us complaints? Or are we looking at those things which we should be grateful for spending such a long time with that person? Beautifully. So gratitude is one thing which will always help us sail through. So now, not only that it will help us to sail through, believe me, dear friends, the number of opportunities, the things we get into a life, the magical opportunities, the possibilities this gratitude brings, you will only be able to realize and observe when we do it. That is the only condition. Yes, sir. Okay. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn into a gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's past relationship and the person is no longer in your life. Yes. Sit What are down. we going to do today? Today's practices that we will look for any problematic condition or a relationship which is there, and if it is there, it is bothering us. Therefore, we still feel it, even if though the person is there or not. So now we will change that particular relationship or the feeling which is bothering us so much. And then even if the person is there or not there, if it is bothering us, that means we have to change it. How are we going to do it? This is what she's going to tell us. So up till now, we have talked about how complaints, they spoil our relationship. How when we don't have a good communication. The good communication means we are open to discussion to everything and anything and everything. It is not then when it is my turn to talk, you tell me everything. But when it's like when it's your turn to talk, you tell me everything. But when it's my turn to tell you something, you are not happy hearing that. So that cannot be good communication, right? So if there is a good communication is very important for a good relationship. Trust, all these things are, of course, ये सब चीजें तो हम सबको पता है, चाहिए ही सही. But there are few things which are very important. Yes, dear. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about that person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they were there. Yes. So what are we supposed to do? We are going to change that relationship which went bad or sour. What are we going to do? Now, once we have thought about it, we will write 10 things about that relationship, because at one point of time, it was very good, no? So what were those good things you really enjoyed that time? So we are going to bring those things in our life.
Certain things you remember, certain things somebody else would be also remember, or you know that this person is famous for all these things. So if there are not 10 things, if you come across only 5, I remember only 5, because now I don't want to think about that person, because I'm not at good terms with that person. So I no more think about those things. But whatever I'm able to recall, now rest of the things, other people are also talking about that person. How is that person? So in that case, we can write all the 10 things. So we'll take about a relationship, talk about 10 things, those things which were very good before the relationship deteriorated or ended. Right here? Yes. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. Beautiful. You don't need another person to clap with you. You can clap all alone. Now, somebody would say, जब वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? अब मुझे बताइए साहब, हील किसको करना है, अपने लाइफ को किसको चेंज करना है? Who want to do that? Who wants that peace? Who wants that happiness? If I want it, I will do it. Right? Yes. Okay. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all our relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Carry on, sir. Dash name I am grateful for, and then what? Yes. Now what you will read here, we have to follow this format. This is how we are going to write 10 good things, positive things about that person. So as that is what it means, that as we dig deeper and discover what are the good things we are going to write about. So this is how I'm going to write. The name of the person would be the first thing. Name of the person, and I am grateful for what? If I just write name, Ruchi, I am grateful, then it doesn't solve our problem. How many times am I going to write Ruchi, I'm grateful, Ruchi, I'm grateful? For what? Right? Yes. Yes, Yeah. sir. First one is Paul. I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage and many of my relationships today. Yes. You see, this Paul is her father. And the mother, now the father is not there, because and they were already separated. Now the mother is writing, like after they were separated. So she was on her own. जब वो अकेले मैनेज कर रही थी सारी चीजें, she learned a lot naturally because उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई. So now she is looking at that as a gratitude, right? That she learned so many things. Yes, sir. Yeah. Second, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. Wonderful thing, no? Yeah. Third, Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. What a beautiful line. Yeah. Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है ना. The person who is taking care of the house, the person who is taking care of the children, the person who's taking care of everything around would say, I'm so busy. He just has to go. He would just go to office and they're doing nothing. But then he's the one who is bringing all that money, because of which the household can be run. You can run the household. Okay. Fifth, Paul, I'm grateful to you for the precious memories I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Why he did not have the opportunity? He was busy working with you. Yes, he was out, poor fellow, working. She was the one who was at home. Yeah. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss.
Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. So nice. Paul, I'm grateful that you want to continue to be father to our children. Yes, therefore he's still there around. Yeah. And Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know this means as much to you as they do to me. Yes. You see, up till now, when we have seen a relationship break, we all only hear all the dirt with all the dirty things which are washed in public. How many times? I don't think so. Somebody would sit down and write so many things from that relationship which did not go well. Beautifully written. Yes, By sir. the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. Because it may happen, sometimes a relationship could be that bad that this practice doing once would not solve the problem. So in that case, we are free to do this practice for few days daily. So that what is the set point? We have to feel those feelings gone. That bad feeling should not be there. That is the limit you have to reach. So now, if for the first time we did it, I did not reach there, I still have certain things I feel here, that means I need to repeat it tomorrow also. Or in that case, if I repeat for a few days and it's okay, but sometimes it happens, okay, it is done. But then there are certain more things I can repeat with different people also. This is also open. Yes, dear. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is a person who uses gratitude who receives the benefit in their whole life. Yes. Like if I am healthy, this health is mine. If I am happy, this happiness is mine. So it is only, if I need to use gratitude as a powerful tool, I don't need anybody to help me in doing that. So simple it is. But poor thing, it is asking only one thing. You have to do it every day. Or, it is not possible that today I am doing it and 10 days I am not doing it. It will be, आपकी life में वो दिखने लग जाएगा. The dryness will again come. The pastures are greener, but then they again go wild. So this is what would happen. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel at peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationship in your life magically improve. Why can anybody tell me why would this happen? Because you are many people no longer holding the grudge or the bad feeling towards. So it should, sir, then in that case, it should only go for the one person only, otherwise, if it's not that it is gone for that person also. It is like for other current relationships will also magically improve. Why? Because we are vibrating at some higher frequency. Very good. Very good. What else? You are feeling at peace within yourself, basically. Wonderful. So naturally, what are you attracting? You're attracting good relationships. Yes, you're attracting that peace in all the relationships. Again, we are talking about law of attraction. This is law of attraction. No other rocket science. This is law of attraction, dear friends. So what is happening? All other relationships are also culminating in something beautiful. Right? So this is how things will change.
It's not that we have done through this exercise, we have not only done that one particular relationship, we are changing subsequently, we are changing all the current relationships as well. Why? Because when you are in gratitude, just remember that the complaints would not be there, less complaints, more gratitude means you are looking at more positive. So when we are looking at more positive, that will definitely give us more happiness. And therefore we are looking and we are doing same for all the relationships. ऐसा थोड़ी कि एक में मैं complaint नहीं देख रही हूँ और बाकी में देख रही हूँ. Because if I am vibrating at that level, naturally I'm making and changing all my relationships. That is the beauty of it. Yes, sir. Yeah. In future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in relationship. Wonderful. Wonderful. Carry on, sir. Yeah. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yes. Yeah. This is every day's gratitude practice. We are doing it. Yeah. Yeah. Second, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name I am grateful for, and please follow this format. Name of the person, I am grateful for what. As I told you, the reason is very important for your brain and the heart to sink into it. दोनों में sync होने के लिए बहुत जरूरी है. Yes, sir. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Wonderful. So morning we get up, write the gratitude list of 10 things, and then at night we sleep with our magic rock, and in between this is one more practice which we would do. And these are, I call them tools. These are certain tools, they empower us. Otherwise तो मुझे किसी ने कहा कि आप पॉजिटिव होइए. अब मेरे सामने सिचुएशंस ऐसी हैं तो आप मुझे बताएंगे तो सही ना कि मैं पॉजिटिव कैसे हूं. तो इन द सेम वे हमें ग्रेटिट्यूड करना है, पर वो ग्रेटिट्यूड करना कैसे है? So these are all the tools which empower us. So when something is of this kind happening, we know how to do it. So therefore I call it that this gratitude is no less than a magic wand. आप ऐसा करो और वो ऐसा करके चीजें चेंज कर देता है. एटलीस्ट आपके यहाँ से चीजें चेंज होती तो वही, जैसे मन की स्थिति वैसी परिस्थिति, जैसा अंदर होएगा वैसा बाहर आएगा. तो फिर हमको अंदर चेंज करना है ना, कैसे करने का है. So these are the tools. Therefore I every day tell you, do it. करेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा. Right, dear friends? So हम में से अब सब लोग ये देखेंगे कि मैं ग्रेटिट्यूड कितना कर रहा हूं अपने रिलेशनशिप्स में, कितना कर रही हूं अपने रिलेशनशिप्स में. तो सबसे पहला वाला क्या है कि पहले तो मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरी कंप्लेंट तो नहीं है. यदि मेरी कंप्लेंट नहीं है तो अपने आप आधी चीजें वैसे सुधर जाएंगी. तो फिर मुझे कहाँ चेक करना है अपने आप को? नो कंप्लेंट्स. सी एवरीबडी has a different perspective of looking at things. आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, दूसरे को नहीं लग रहा है. So this is a difference of opinion. ठीक है. एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं किशोर जी, either get convinced or convinced. आप दूसरे को कन्विंस कर लीजिए, आप खुद कन्विंस हो जाइए. बहुत अच्छी बात है. Anything to share, dear ones? Any question here? Yes, ma'am. Yes, dear Manali.
मैम ये वाली जो मैजिकल प्रैक्टिस है ये सच में मतलब सारी मैजिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है बट ये वाली मेरी ये बहुत फेवरेट अच्छी, है, मेरी भी फेवरेट है। बहुत अच्छी। मतलब एक रिलेशनशिप फ्रेंड थी जिससे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने काफी टाइम बात नहीं किया था और लास्ट टाइम जब अपन ने ये किया था ना तो हाँ मैंने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू किया था 21 डेज तक। तो भी हाँ मुझे लगा मुझे फिर से करना चाहिए, तो धीरे धीरे जब मैंने ये बहुत बार किया ना उसके बाद ऐसा हुआ कि आगे से कॉल आया और अब हम लोग बात करते हैं एज अ गुड फ्रेंड्स। वेरी तो गुड। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ऐसा। यस यस, वही बात है ना कि क्या होता है कि बहुत बार रिलेशनशिप जाता क्यों है। अभी जैसे वही वाली बात है कि आपने मुझे 1000 रुपए की गिफ्ट दी है, अब मेरे को तो मुझे उस वक्त 1000 रुपए नहीं है या मेरा मन नहीं है तो मैंने आपको 1000 रुपए की गिफ्ट दी नहीं। तो अब यहाँ क्या था, एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मैंने तो 1000 रुपए की थी, उन्होंने तो मुझे 1000 रुपए की नहीं दी। तो फिर क्या हो गया, वाइब्रेशन तो गलत किया, मैं तो इतनी अच्छी दी थी, उसने तो मुझे अच्छा नहीं दिया है। तो ऐसे ही आप एक्सपेक्टेशन 10 और चीजों के लिए मान लीजिए। तो जब एक्सपेक्टेशन होंगी तो कैसी चीजें होंगी, फॉर श्योर। और जब मैं दूसरों में अच्छी चीजें देखूंगी तो मेरे रिलेशनशिप कैसा होएगा, you will be appreciative of so many things you have not done up till date. Till date you have not done so many things, इतनी सारी चीजों के लिए आपको appreciation आने लगेगा। और फिर जिसके साथ आप बगैर किसी जजमेंट के साथ आप यदि उस इंसान को ऑब्जर्व करते तो आपको लगता है इसके अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि नो कंप्लेन। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम उस दिन कहा था, हर थोड़े दिन में आप डाल दीजिए, अपने आप को बोलिए कि आज सुबह उठ के 12 बजे तक आई ऑब्जर्व दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी कंप्लेन, मैं नॉट डूइंग एनी कंप्लेन, आई एम नॉट इन कंप्लेन। तो उसके लिए आप एक बैंड बना लीजिए, एनी कलरफुल बैंड, उसमें लिख दीजिए नो कंप्लेन और वो बैंड को अपने रिस्ट पे बांधिए। यस मैम। तो दिस इज हाउ वी विल रिमेंबर कि नो कंप्लेन हुई, नो कंप्लेन। Isn't it? When I'll not complain, I'll definitely look at good things. यस क्योंकि मैम। दिमाग को कुछ तो चाहिए। तो जब वो खाली होगा, देखो ये एक ऑटोमेशन है हमारे पास, जब भी वो खाली होगा वो नेगेटिव अपने आप ढूंढ के लाएगा, पॉजिटिव आपको ढूंढ के लाना है उसके लिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। यस राइट? सो नो कंप्लेंट्स, नो ब्लेमिंग, नो जजमेंट्स, ऑब्जर्व गुड थिंग्स, यस मैम। एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। यस डियर। मैम वो 10 इयर्स की फ्रेंडशिप थी, फिर लड़ाई हो गई तो वो सॉल्व हो गई है। अब बेस्ट पार्ट है कि मैंने नंबर जो मतलब डिलीट कर दिया था हम लोगों ने, नंबर कॉन्टेक्ट अब जो सेव किया है वो मैंने थैंक यू नाम से कर दिया। So nice, so तो दैट nice. कभी भी कॉल आता है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि हाँ ग्रैटिट्यूड। So what a nice, wonderful. You taught us something great, huh, Manali? थैंक यू मैम। Wow. सुषमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम जो मतलब रिलेशनशिप के बारे में आज जो हुआ है, आज जो क्लास हुई है उसमें तो इतने मेरी लाइफ में पहले तो इतना नहीं था, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ये जो रिलेशंस इन लॉज की उसमें है साइड से है मैम, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके बारे में कौन सा पॉजिटिव पॉइंट लिखूं। तो उसमें मैंने आपको एक बहुत एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया था सुषमा जी, कि आपको नहीं दिख रहा है तो आप देखो उनके लिए लोग क्या कहते हैं, तो वो आप भी अपनी तरफ से मन से लिखिए, क्योंकि हमारे पास वो स्पेस ही तो बनानी है ना, यहाँ पे वो स्पेस नहीं है तो वहां से दिख नहीं रहा है। वरना तो देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुषमा जी में 100 चीजें खराब है, राइट? सुषमा जी में 10 चीजें खराब है तो 12 चीजें अच्छी भी तो होंगी ना। तो अब मुझे वो परसेप्शन, वो नजरिया ही तो चाहिए, वो उस नजरिए से तो मुझे देखना है जो हरीश सर कह रहे हैं, इंटेंशन डालना है मुझे, व्हाट इज गुड इन दैट। मतलब आप देखिए जब से आप शादी करके आए तो क्या उन्होंने आपके साथ एक भी अच्छी चीज नहीं करी है टिल डेट, जब से आप उस घर में आई हैं और आज तक क्या आपके साथ एक भी अच्छी चीज नहीं हुई है? आपके पास बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो भी इस घर की देन है। यस मैम। वो हमें हमारे मम्मी ने नहीं दिए कि ये ले जाओ यहाँ से। तो आप ये सोचिएगा,
इसको हल करने के लिए आप ये सोचिएगा कि क्या क्या अच्छा था मेरे इस घर में, राइट? एंड आई थिंक दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. यस मैम. Yeah. थैंक यू You're welcome, मैम. my dear. Yes, आज Manisha की ji. क्लास तो मुझे बहुत टफ लगी है मैम. देखिएगा, जब हम लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, एक वो माइंडसेट की बात होती है कि मैडम सर एक मिनट है, एक को मैडम अभी नाम वापस भूल गया, नरेंद्र जी ने नाम बताया था मेरे को. दैट लेडी, शी वाज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस व्हेन शी वाज एट द एंड ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड शी वाज स्टेइंग इन काउ शेड and she forgave her father husband and she adopted many children, and at the last her husband went mad and she kept him also. तो इतना तक आदमी forgive करता है. महाराष्ट्र लेडी. हाँ, यस यस यस. हाँ, कि उसका बड़ा वीडियो भी आया है, बड़ा वीडियो आया है, ऑडियो. यस यस. अब आप देखिए, आप सब लोग एक चीज को देखिएगा, उस लेडी के पास ग्रेटिट्यूड होगा ना. बगैर ग्रेटिट्यूड के तो इतनी सारी चीजें करके आगे नहीं आ सकती थी, राइट? तो उस ग्रेटिट्यूड ने उसको उस लेवल तक जाने से रोक दिया. She could have done the same, right? The man who threw her out of the house, even she could have thrown him out when he was mad, right? But then she did not do that. See, that is the power of gratitude, that it would stop you from stooping so low. और सबसे बड़ी बात ये है, she was illiterate and she did not know Rona Bryant. We know Rona Bryant also, and we are literate people. But sir, Rhonda Byrne to abhi hai. This is gratitude has been in this on this earth. Yeah. हम लोग सारे रिलीजन्स में पढ़ते हैं, शुक्राना करते सुने. अपन ने कितने लोगों को शुक्राना सुनते हुए कहा है कि शुक्राना है भाई, भगवान का शुक्राना है. अब वो बोलने में और करने में फर्क हो सकता है, बट सुनते तो अपन बहुत बहुत टाइम से है, राइट? हाँ मनीषा जी. मैम जैसे ये नो कंप्लेंट पीरियड चल रहा है कि मतलब कंप्लेंट नहीं करनी, सबसे पहले तो क्रिविंग नहीं करना है. तो मेरा क्या है कि मैं ना आजकल बहुत साइलेंट रहती हूँ, मतलब ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, जिसको जो करना करे. तो आई एम ऑन राइट पाथ और नॉट? Yadi, if that see, that should give you peace of mind. If you are suppressing your emotion, बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं मम्मा क्या हुआ, मैं कहती कुछ नहीं हुआ, मैं बैठी हूँ आराम से, तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ. नहीं, उनको बात लगता है ये मम्मी नहीं को है. कुछ हो गया है. नहीं, देखो उसमें दो चीजें हैं. एक इंसान शांति से बैठता है, पीस ऑफ माइंड के साथ होता है, और वो बहुत सुकून से बैठा होता है, चाहे वो ना बात करे. एक है कि मुझे तो कोई सुन ही नहीं रहा, किसको बोलूं, फिर बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ग्रेटिट्यूड कर, मत बोल. तो फिर मैं परेशान होके बैठी हूँ, अपने आप की जितनी भी फीलिंग्स उसको दबा दबा के तो फिर वो वापस निकलेगी साहब, बीमारी में निकलेगी. When we screw our emotions, it would come out in the form of pain. Pain can be anywhere. नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है, सब अच्छे हैं, ठीक है. तो मेरे को किसी के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, कोई एंगर भी नहीं है कहीं. लेकिन मैं साइलेंट बहुत हूँ, मन नहीं करता किसी से कोई ज्यादा बात करने का. ये रहता है कि ठीक है तो वो भी तो सही नहीं है ना मैम. ओके भाई आज मुझे किसी से बात करने का मन कब नहीं होता है? जब मेरा मन खराब होता है तो मुझे लगता है प्लीज, मुझे सपोज मेरा मन आज बहुत खराब है, तो मैं बोलूं प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है. मैं क्या चाहती हूँ? शांति चाहती हूँ. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब यू आर द बेस्ट जज, यू आर द बेस्ट जज कि आप इन सारी चीजों में से कहां पर अपने आप को पाती हैं. आप और ऑब्जर्व करिए अपने आप को, और देखिए और ढूंढिए अपने आप को कि कहां पर है. ओके. हाय सुषमा जी. नथिंग मैम. एक्चुअली जो लेडी का जो एग्जाम्पल अभी दिया है सर ने मैम, वही मतलब मैं ये नहीं, वो तो मतलब अनएजुकेटेड थी या कुछ भी था, लेकिन मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे ब्रदर ही मुझे यहाँ पर लेके आए मैम. उन्होंने तो मुझे ऐसे ही निकाल दिया मेरे हस्बैंड के जाने के बाद. तो मैं उन लोगों के बारे में पॉजिटिव नहीं लिख सकती हूँ मैम. अच्छा एक बात बताइएगा सुषमा जी कि आपकी ब्रदर अभी यहाँ पर आपको लेके आए, तो आपके हस्बैंड के जाने के बाद आप में क्या क्या फर्क आया? देखिए जो लॉस है वो लॉस तो कोई नहीं भर सकता, राइट? यस मैम.
अब उसके बाद आप यहाँ आई हैं, तो अब आपकी लाइफ में क्या क्या कुछ तो अच्छा हुआ होगा? मैम अच्छा ये हुआ कि बस भाई सपोर्ट कर रहा है, बच्चों के लिए भी, उनको सेट करने के लिए भी, मुझे भी। बस ये ओके अच्छा हुआ कि अगर मैं वहां रहती तो शायद मेरे बच्चों का फ्यूचर नहीं था। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि शायद मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, और बात करेंगे अपन लोग इस बारे में। जरूर मैम, यस, चलो। जरूर। So, dear friends, if we have any question, we can still talk about it on Monday. So, see you on Monday, same time. Thank you. Thank you so थैंक यू much मैम।